welcome you all. May I request our coordinator, Dr. B.K. Goyal, sir. Dr. B.K. Goyal, sir, is very respected senior founder member of IIT Delhi, and he's managing board member, DMA Hospital Cell, and executive board member, GMA, NABH Accessor. I request Dr. B.K. Goyal, sir. Sir, please coordinate today's meeting and introduce the speakers. Sir. Good afternoon, everybody. Today we are discussing a very important topic of Medicolegal. Sir, join नहीं किया sir? Hello? Good. Today we are discussing a very important topic of Medicolegal. एक second, sir. जी sir. Mute if you are talking on phone, sir. We day and night. I'm just interrupting. Sorry, Sushil. Dr. Arun Gupta sir को जरा link भेज देना. Yes sir, ठीक है. Dr. Arun Gupta sir is waiting. Okay sir. Please continue, sir. Day and night we are going in the academics. Academics is very important for our practice. But beyond that, I always say medico-legal is more important nowadays. We have to be equipped with the medico-legal knowledge. We should know. We all see the patient day and night, but how to deal with the patient, how to communicate with the patient, how to write in the prescription is very important, very important, very important. जरा देर में पेशेंट कह देता है मैं तो डॉक्टर के पास गया था मुझे ठीक से देखा नहीं फालतू की फीस ले ली मुझसे. Now keep on defending if you don't have the proper document. I won't take more time. Today we have the government very eminent speakers with us, Dr. Satish Sharma and Dr. J.K. Gupta. First I will introduce Dr. Satish Sharma. First talk is Dr. Satish Sharma. His talk is on what is medico-legal negligence. And the topic, and Dr. Satish Sharma is a very senior pediatrician having MD degree with FIAP recognition, and he was the National Vice President of IAP North Zone 2024. He is right now the Secretary General of the IAP Medicolegal Chapter 2022-25. He is the Founder Secretary of IAP National Respiratory Chapter Haryana 2021-24. He has got the Lifetime Achievement Award by IAP Haryana 2016. He has got the Chikitsa Rasan Award by IMA Rohtak, and he is a speaker in various pedicons and published multiple papers in reputed journals. Over to Dr. Satish Sharma, sir. Sir, just a moment, sir. I request Dr. Shamina, Secretary IP Delhi, to say a few words. Thank you, Dr. Punita and Dr. Niti, for arranging all things for this important topic. And I welcome to all dignitaries, including V.K. Gupta, sir, J.K. Gupta, sir, and Satish Sharma, sir. Definitely that is one of the common entity and problem we are facing in day-to-day practice, and definitely we get the more fruitful outcome from this discussion. Thank you, and go ahead for this. We are also joined by Dr. Sunil Singhal, Vice President DMA, and Dr. L.K. Bharti, President-elect of NNM. We welcome them. Dr. Piyush Jain, would you like to? Dr. Ajay, Dr. Arun Gupta was supposed to join. Has he joined? Let me check. Yet. Not yet. No. Joining, sir, 1 or 2 minutes. Dr. Piyush Jain, in the meantime, please say a few words. Thank you, Dr. Ajay. As we all know, the medico-legal problems are increasing day by day, and the patients and their relatives are becoming aggressive. And on what point they become aggressive and what point they have a difference with the doctor or with the hospital administration, it is difficult to guess many times. So we have to be very Connection is off. I think we have lost him. I think we can go ahead with talk of Dr.
Dr. Goyal sir, please request Dr. Satish Sharma. Yes, Goyal sir, sir, please, Satish, start with your with your presentation. Dr. Satish, are you here? Mr. Satish? Satish Sharma. तो तुम लोग चले जाओ. सर म्यूट में है सर. वो भी ऑफ हो गया उनका भी, पता नहीं क्यों. Good afternoon, everyone, esteemed faculty and Namaskar, sir. Welcome, Dr. Vasudev. thank Good you. afternoon, sir. Welcome. Thank you. सर afternoon, ज्वाइन sir. नहीं हो पा रहा क्या? हेलो सतीश शर्मा कहाँ चले गए? सर, स्लाइड शेयर नहीं हो रही है अभी आपकी. Maybe you can get a JK. हाँ, अभी नहीं हुई. That is JK, you can start. Sir, हाँ. just a minute. Actually, it will. I will take a few minutes, sir. I will introduce Dr. JK. Dr. JK is right now the chairperson of the IAP Medicolegal Group 2023-45, and he was the vice president of the National Medicolegal Group and having various posts in the National Medicolegal chapter. He was the executive member of UP in 2017. He was the president National Neonatology Association Kanpur 23, 22, and 21. He was the secretary IAP Kanpur 2008. He was a faculty in Pedicon and UP Pedicon and Emriacon and Melcon. He was the editor textbook of medical negligence in pediatrics. He was the author Right to Health in Emergency in book Right to Health. He is the author Journal of Indian Medical and Ethics Association, and he has authored number of books on medical legal issues. Dr. JK, you can start with the presentation. Yes, your slides are there. It's visible. Go ahead, please do. Okay, sir. So, am I audible now? Yes, yes, please. Okay, sir. Okay. So, thank you, IAP Delhi, for having a medical legal webinar on very auspicious day of Medical Legal Protection Day, which is to be celebrated on 17th. And I thank to Dr. Goyal sir, Dr. Satish Sharma sir, Dr. Ajay Gupta, Dr. Punesh sir, and all the dignitaries of IAP Delhi for inviting me. Actually, my topic of talk is dealing with consumer complaint. Actually, there are many times when we have to take an encounter of consumer complaint, whether in form of notices from patient itself or in form of notices from consumer forum. So many of you are maybe fortunate enough not getting, but everybody should know how to deal with consumer complaint. So actually, I have made my talk in just like a few cases in various academic sessions. So actually, these cases are true cases. So actually, first case is these cases were taken by me and my other colleagues also. So actually, in first case, legal notice received for charging excessively, contrary to quality services claimed for a baby discharged from an ICU after prolonged stay of 25 days due to hospital-acquired infection and treating the baby by other than agreed doctor. Attendants are now threatening to refund excess amount, otherwise face consumer complaint. So question arises, can consumer complaint be filed for charging excessively despite apparent cure of baby? Another thing is, should one reply to legal notice? So actually, I think that there are the two main issues in this case. Coming to another case, an expiry date vaccine given accidentally to a patient 1 year back, no harm sustained to that baby. Pediatrician received a notice from District Consumer Forum. He didn't receive notice of District Forum.
nor made appearance in forum even after 2 months of receiving notice. So question arises in this case that can a consumer complaint be filed even if there is no harm or injury to sustain to baby or patient? Another question is till what time one can file written statement? And third is what will happen if one does not make appearance in the court in response to consumer forum notice? We will take actually all the answers of these cases at the end of the talk. Another case, a malnourished baby with convulsions managed at hospital and patient was admitted by manager of orphanage. No advance deposit was made but promised. Baby expired after 2 days with a diagnosis of acute bacterial meningitis. After 1 year, consumer organization filed consumer complaint at district forum. So question arises, can consumer complaint be filed even without making a payment? And who can file a complaint? Can consumer organization may file complaint? Another case is criminal case filed for amputation of right hand of first year baby due to Vigo related injury at Kanpur. Consumer complaint filed against hospital and treating doctor after 6 months at Delhi by father. Hospital willing for settlement through mediation. So question arises, can criminal and consumer case run concurrently? Whether can complaint be filed in consumer case? Where can complaint be filed in consumer cases? And can mediation be made? So these are the cases which sensitize us and raises various issues. So I have pointed out some issues which I'm going to address in this talk. Who can file a complaint? Who can claim to be a consumer? In what matter complaint can be filed? What does deficiency in service mean? Where complaint can be filed? Till what period a complaint can be filed? How to deal with consumer complaint? How does order of consumer forum signify? What does order of consumer forum signify? How can one appeal against judgment of consumer fora? What are the provisions regarding mediation? And whether government doctors are exempted under CPA. So we should acknowledge the fact that Consumer Protection Act is consumer friendly because the name is consumer protection. So it is made for consumer protection. And preamble says that it is an act to provide protection of the interest of consumers. It is very much evident in objective and written in the Consumer Protection Act. And there are many evidences also because there is a minimum court fee for filing the complaint. There is no court fee for filing appeal for the complaint. If a respondent has to appeal, then they have to deposit 50% of award. But there is no court fee for appeal of the complainant. Complaint can be filed from multiple places, even online, and facility of transfer is there on request of consumer, not on the request of respondent. And summary proceeding is there in Consumer Protection Act. So coming to who can file consumer complaint. So there are 6 category of persons who can file consumer complaint. Number 1, consumer itself, any registered voluntary consumer association, central or government or any state government, Central Consumer Protection Authority, legal heir or legal representative, and in case of consumer being minor, his parent, legal guardian can file complaint. So in that case, a consumer organization which is recognized and is registered can file a complaint. Now, who can be consumer? So as per definition given in Consumer Protection Act, any person who hires or avails of any service for a consideration means payment, which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment. So if any payment has been made
or promised, or it has been partly made or partly promised, or if there is a there has been payment on check which has been defaulted, or payment has not been cleared yet, but you have received the check. So if there is a deferred payment, then all these conditions are apt for holding anyone who is consumer. And in it includes any beneficiary of such services other than person who hires or avails such services. New thing is in Consumer Protection Act is Central Consumer Protection Authority. It is a new inclusion in CPA 2019, and it is a body which is established at Delhi NCR by central government, and it is to regulate the matters relating to violation of consumer rights, unfair trade practices, false and misleading advertisements, and enforcement of right of consumer as a class. So where are complaints are as a class, so such body, CCPA, can take action. And central authority may file complaint before district commission, state commission, national commission, and may intervene in any proceeding which is going on. And there is an investigation wing also in this CCPA. So it may order for investigation, and district collector may require or investigate complaint on the reference made to him by central authority. So central authority may direct district DM of any district to make a investigation in consumer complaint. And there are many situations in which consumer complaint can be filed. Actually, I have compiled all the situation and make a summary of that one. So, deficiency in service. So, what does service signify? So, service means any deficiency in service means any act of negligence or omission or commission which causes loss or injury to the patient. So, any act of negligence. Actually, Dr. Satish Sharma sir will tell what is negligence. So, any act of negligence. Negligence may be of two types. It may be due to commission of any act, or it may be due to omission of any act which causes injury. And in Consumer Protection Act, definition of injury is very vast, and injury includes any harm which is illegally caused to the person in body, mind, or property. So, if there is a if there is a mental stress, or if there is a financial loss to any person by any act of negligence, then it is also a deficiency in service. Deliberating withholding relevant information to the consumer, charging for a price in excess fixed by law, displayed on price list, agreed between the party. So, in today's scenario, if Ayushman scheme has fixed a price and you are charging more than that, or in any actually in any clause there is a fixation of charges, and you have if you have displayed the price list, or if it is mutual agreement that this will be priced that is written, if you are charging in excess, then it may be a case for consumer complaint. False representation that services are of particular standard, quality, or grade. So if you are misrepresenting the things that you have a higher standard of services, and you are mentioning that you have ICUs of such and such standard, and such and such facility are there, and in reality these are not there, then false representation may cause consumer complaint. Making a false and misleading representation regarding need or usefulness of services. So if there is any medicine, just like actually, I think that case was of Coronel also. So if there is a medicine or there is a service and you are boasting of usefulness of that one, then it may also attract consumer complaint. False representation of warranty or guarantee. So it is very clear that no one should make warranty or guarantee, and not issuing bill or cash memo or receipt. So it is a new inclusion. So everybody should learn that he has to issue bill or cash memo, or he has to give receipt. And breach of confidentiality is also attracting consumer complaint.
and terminating contract of services unilaterally without any reasonable cause. So we should learn that if there is a violence or if there is any situation or any dispute between patient and doctor or hospital, and you are bound to terminate contract, then you should mention the cause. It should be reasonable cause, and if without any cause services are terminated unilaterally, then it may attract consumer complaint. And permitting one party to assign the contract to the detriment of other party consumer without his consent. There are many situations that surgery are done by LSCS, hysterectomy are done by surgeon, not by obstetrician. So actually, in such situation, if patient is not taken in confidence, so consumer complaint may be filed in such cases. Or if you are delegating some patient, some patient to another doctor, so in that case, a consent should be there, and you should note down that I'm going in such and such program, and I may not be available, and such doctor will take care of that one, and consent has been taken of the yeah, and a patient had been informed. And excessive security deposit. Actually, it has not been explained in Consumer Protection Act that what is excessive, but excessive security deposit is one ground on which consumer complaint can be lost. Another issue is that whether government doctors are exempted under CPA or not. So in 1996, in the inception of Consumer Protection Act, Consumer Inclusion of Consumer Protection Act for the doctors, IMA versus VP Shanta has specifically mentioned that patient aggrieved by any deficiency in treatment from both private clinics and government hospitals are entitled to seek damage under CPA. So it is very much clear that private clinic and government hospitals both are included. But IMA versus VP Shanta has mentioned certain conditions in which government hospital or any other hospital may exempt. And court has said that services related to the patient by medical practitioner, except where doctor renders services free of charge to every patient, or under a contract of service free of charge to every patient. So if services are made free of charge to every patient, it means it includes registration charge also. So if any hospital who was taking care of every patient free of charge, or it is taking a minimum registration charge, you may say 5 rupees, 10 rupees, then it is exempted, yeah, or it is out of domain of CPA. But if any hospital charging 100 rupees, 200 rupees, or it is charging 5 to 10 rupees registration, but it is charging 1000 rupees for MRI, or 250 rupees of ultrasound, so it may also cover. So registration charge amount is exempted, but excess of registration amount or stationary charges is not exempted. So many government hospitals are under CPA, and similarly ESI is also under CPA, and it was held by Kishore Lal versus ESI Corporation Supreme Court case. Where can be complaint filed? So there are three types of jurisdiction. One is pecuniary jurisdiction, which is on the basis of payment made. Another is territorial jurisdiction, and third is appellant. So coming to pecuniary jurisdiction, so as per this jurisdiction, commission shall have a jurisdiction to entertain complaint as per value of goods or services paid as consideration. So actually earlier there was a provision that pecuniary jurisdiction was decided on the basis of compensation claimed. So पहले ऐसा होता था कि अगर आपने कितना कंपनसेशन मांगा है, जैसे आपने 25 लाख मांगा है, तो 20 लाख तक डिस्ट्रिक्ट में होता था, 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट में होता था, 1 करोड़ से ऊपर नेशनल कंज्यूमर फोरम होता था. बट नाउ it is as per value of goods and services. So and district forum it is up to 50 lakh, state forum it is 50 lakh to 2 crore,
and National Consumer Forum, it is more than 2 crore. Actually, it has been revised. So in the inception of CPA 2019, it was up to 1 crore, went to 10 crore, and more than 10 crore. But as for notification, government notification 2021, it is revised. So for District Consumer Forum, it is up to 50 lakh. A State Consumer Forum, 50 lakh to 2 crore, and National Consumer Forum, more than 2 crore. And we can assume that most of the cases, 99.9% case, will come under District Consumer Forum, because hardly any case occurs in which payment excess of 50 lakh is made. So 99.9% case will admit under District Consumer Forum. Territorial jurisdiction of Consumer Forum. So from where consumer complaint can be filed. So earlier it was there that opposite party means doctor or hospital where they reside or they work for in capacity, and where cause of action was arose. So earlier these were two grounds, but now complainant residence is also taken in consideration. So complaint can be filed on the places of residence of complaint or where he is working or complaint. So if treatment is given at Kanpur, now father is living at Delhi and he's doing a job at Bangalore. So he can file a complaint in all three places. So actually, it is in favor of complainant, and jurisdiction is wider now. Appellate jurisdiction. Earlier, there was a provision that appeal may be made from district to state by depositing 25,000 or 50% of award, and from state to national 35,000 or 50%, or national to Supreme Court 50,000 or 50%. But now only 50% has to be amount has to be deposited. So it is again in favor of consumer. So for complainant there is a no court fee for appealing, but for respondent there is a 50% amount must be deposited for appeal. So another important question is that till what period can a complaint be filed? And it is a very important, and it is a limitation period. Actually, there is a limitation clause 24A in the CPA 1986, and similar clause is section 69 in CPA 2019. And both says that complaint must be filed within 2 years of cause of action. And after 2 years, complaint may be entertained if complainant has shown a sufficient cause and court has been convinced. So 2 years is the window period in which complaint can be filed, but it should be from cause of action. And what is cause of action? And cause of action has been defined by Supreme Court in VN Khande versus Anita Sena Fernandez case. And there are certain conditions in that. I'm not going into that detail, but 2 years should be there. And if after 2 years there must be a condonation delay application, and that condonation delay application must have been approved by Consumer Protection Act. So when one is responding or one is dealing with consumer complaint, he must stress limitation period in very beginning, in notice period, notice reply also, and in written statement also. And it is very important point which has to be highlighted that since limitation period clause is there in Consumer Protection Act, so Limitation Act will not apply. And Limitation Act 1963 has a limitation clause which is called disability clause, and it is 6.7. And it says that insane, idiot, minor, legal representative may file complaint after their disability has been seized. So insane or idiot clause or minor is not entitled for any relief under Consumer Protection Act. So it may be assumed, it should be learned that minority is not a factor for filing
later complaint. So main important clause is up to 2 years. It is not like that a patient who's become 18 or who's become 16 may file. Only 2 years, and after that sufficient clause and condonation delays there. How is complaint filed in consumer forum? So this is the procedure. To complaint is filed. Actually, complaint may be filed electronically also in CPA 2019. And fee for consumer complaint is up to 5 lakh. It is nil, and up to 50 lakh it is 1,000. So you may assume that in district forum maximum fee which has to be deposited by complainant is 1,000. And most of the complaint is under 5 lakh, so there is apparently no fee. So again, it shows that consumer protection is consumer friendly. And after complaint has been filed, admissibility has to be decided by consumer commission within 21 days. And after it is admitted, then notice has been served by post and by email may be sent, and it has to be responded within 30 days. So the reply has to be made within 30 days. And there is a mediation clause also. So it is a new inclusion in CPA. So within 5 days, court may refer for mediation, and it may later on be referred for mediation also on the suo motu or application of the parties. There are certain conditions in which mediation may not be referred, and these conditions are matter related to proceeding in which there is a grievous injury or death. Grievous injury means any injury to any part, vital part, eye, ear, privatation. Actually, this is a grievous injury is same as per IPC, and we have learned it in forensic medicine. So if grievous injury is there or death is there, then mediation is not applicable. And if allegation of fraud, fabrication of document, forgery is there, then mediation is not applicable. And if there is a public interest case, mediation is not applicable. So you may assume that majority of cases mediation is not applicable for us, for pediatricians, because in most of the cases grievous injury is there, and allegations are there for fraud and fabrication of the documents. Points to ponder in dealing with consumer complaint. So there are little bit tips. Whenever there is a complaint, one has to there is a notice that one has to reply. One should reply, but the reply should be given under guidance of medical legal consultant. And consumer complaints are bound to increase, as I have already said. And all complaint will be in district forum. One should have a professional indemnity coverage of at least 1 crore. And one should become a member of IB Medical Legal chapter to gain medical legal knowledge in advance. It is also one part of preparedness. And responding to complaint, minded that period of legal notice is not waived off in 2-year limitation period. So whenever there is a communication, notice communication, so it is also included in 2 years. And contact to your medical legal expert and lawyer. Immediately intimate your professional indemnity insurance whenever you receive a notice. First thing, you have to make a reference or make a you have to notify the insurer company, and it should be made by email, or it should be received. So you should have a document that you have properly communicated to your insurer, because many times if you delay in this manner, that insurance company may take advantage of this and may refuse to entertain. And better to reply legal notice. Written statement. Time is over. Okay, just actually, sir, I'm taking 2 to 3 minutes more. Maximum time to reply a written statement is 30 days, and 15 days condonation may be allowed. So if you are not replying within 45 days, then ex parte judgment may be made. So you have to reply within 45 days. And paragraph reply should be made. Primary objection should take all technical defense.
further proceeding, rejoinder, reply to rejoinder, evidence, final argument. These are there. So general rule of proceeding is summary proceeding. Medical board formation is not mandatory, and no adjournment already not given. Video conferencing may also given. An order or every order has to be honored, and it may be appealed, and a final order can be appealed only after paying 50%. So coming to cases, actually, I think I have given all the answers, so I'm not going into detail. So thank you, sir. I think all the answers have been given in my slides, so I'm not going to detail one. Thank you, sir. Thank you very much. You have nicely explained the things, how to deal with the case if filed. Now the other speaker is Dr. Satish Sharma. I have given about these details. I asked Dr. Satish to start his presentation. Stop sharing, Dr. JK. Yeah, just stop sharing. Dr. Goel, you will be taking some questions, answers after all the talks? Yes, we can take up. So we can take later on, because otherwise the time will be over. Right, very right. Thank you. It's Welcome, Dr. Arun Gupta, sir, President, Delhi Medical Council. My slides are visible. Hi, welcome all. Welcome, Dr. Arun. Actually, I got the link bit late, so I joined just 5 minutes back. Welcome. मैं ऑर्डर से रिवर्स कर दिया क्या हमने आज टॉक का? चलो अच्छा. Visible है मेरी slide? हाँ, बिल्कुल. Go ahead. welcome, Dr. Arun, sir. Welcome. Thank you very much. I got the link bit late, so I joined late. Oh, sorry, sir. I think मैंने there was आप- some miscommunication. मैंने सुना आपका कंज्यूमर वाला डॉक्टर जेके शर्मा का पूरा सुना. So let us Yes, go sir. ahead. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Satish, sir, please go ahead. Yeah. I think why we are celebrating this Medicolegal Production Day for doctors, and why you have kept this date at 17th February. Because सर as इसको you know, स्लाइड शो पर डाल दो सर, स्लाइड शो पे slide show पे नहीं है सर. नहीं, उस पर ही नीचे सर, राइट में नीचे डाउन स्लाइड शो पे. नहीं हो रहा. एक मिनट. चेंज हो रहा है ये अब? नहीं सर, अभी नहीं हुआ. चेंज नहीं हो रहा. सुशील, आप कर पाओगे? स्लाइड मेरी विजिबल है आपको? स्लाइड विजिबल है सर. ये हाँ कौन सर, सी विजिबल slide है. ओ, ये कौन सी स्लाइड है सर? ये एक मिनट, आ नहीं रहा इसमें. यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड है सर, इंट्रोडक्शन वाली. नहीं आपका अब इंट्रोडक्शन है. मैं दोबारा करा, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा करता हूँ. अब आया सर? हाँ जी सर, आ गया. हाँ जी, आ गया सर, आ गया सर. कंटिन्यू सर. नहीं वो नहीं आ रहा ना, स्लाइड गड़बड़ होगी ना. स्लाइड शेयर पे नीचे नहीं आ रहा स्लाइड. अब आ रहा सर? हाँ सर, आ रहा है, बस वो स्लाइड शो नहीं हो रही है बस. अब जी आप स्लाइड शो पे आपका आइकन है सर, वहीं कर दीजिए. नहीं, आप इधर ले आए, आप राइट में ले आए. लेफ्ट में जाओ सर, जहाँ पे प्लस माइनस का बटन है ना, उसके साइड में जहाँ 56% लिखा हुआ है.
नीचे वही बॉटम में देखो सर, बॉटम बॉटम में, में सर, बॉटम में देखो सर। बॉटम में हाँ राइट हाँ साइड, हाँ हाँ, इसके इसके प्लस बगल में आओ। वाला हाँ, चाहिए। ये इसके नहीं, प्लस इसके बगल में नेक्स्ट। इसके नहीं, प्लस इसके लेफ्ट, लेफ्ट सर, लेफ्ट, ये प्लस लेफ्ट। वाला सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं, सॉरी, प्लस इसके वाला, बगल वाला, प्लस। नहीं नहीं, राइट जाओ सर। ये यस। अब हो रहा है जी? यस, अब तो हो रहा होगा सब। नहीं नहीं सर, और राइट में जहाँ पर प्लस लिख रहा है। ये देखो, मेरे से तो इधर से विजिबल है। चलो अच्छा, ऐसे। कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं वो ठहरो जरा, कैसे हो गया? सर डबल क्लिक करो सर, फुल स्क्रीन पे जाने के लिए। चलो जी, अब आया जी? अब आ रहा है सर? सर इसका नीचे नहीं, से साइज बढ़ा लो, कोई बात नहीं, साइज भी बढ़ा सकते हो नीचे से। साइज बढ़ा लो सर नीचे से, कोई बात नहीं, उसमें जाएगा। नहीं, अब स्लाइड नजर आ रही है जी? हाँ, स्लाइड साइज नजर आ नजर आ रही है रही है सर, कोई सर, प्रॉब्लम नहीं। फुल मेरे स्क्रीन को पे पूरी आ नहीं रही है, है। साइज बढ़ा लो। मेरे से तो हो नहीं रहा से। इसे बोल दो। नहीं हो रहा सर? कोई नहीं सर, उसी को पहले जो चल रहा था उसी को चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। विजिबल तो है ही। स्लाइड शेयर कर दो सर बस। हाँ ठीक है। अब ठीक है जी। यस सर। आई कॉन्ग्रेचुलेट आईपी दिल्ली ब्रांच led by Dr. Pankaj Garg, Dr. Meena, IP West Delhi, IP East Delhi branch by Dr. Puneet, Dr. Ajay, Madam, and all of you that you have organized this a very important webinar to celebration of the Medical Protection Day for the doctor. And this day is being celebrated on 17th of Feb because there was landmark Supreme Court judgment given 2009 on this day, 17th Feb, by Martin D'Souza versus Astaq Ahmed. Thus, no doctor should be arrested on any frivolous complaint, either by the complainant or the investigation officer should not lodge any FIR, and unless until there is gross criminal negligence. Otherwise, the case should be referred to a district board or a specialist of the same specialty. And if prima facie is found, then case should be registered. So we are celebrating this on 17th Feb. Before that, Dr. Gupta, I told you about the consumer complaint. I want to tell you that you should know whether you are negligent or not. Everybody is patient with frivolous complaint that doctor was negligent, this amount and that like that. So what is medical negligence? It defined as a lack of reasonable skill or willful negligence on the part of the doctor in respect of the patient history, examination, diagnosis, investigation and the treatment. And this will result in injury and damage to the patient. The court doesn't expect that you should have very high degree, high knowledge, high qualification, but a reasonable degree of skill, reasonable knowledge, reasonable care as per your qualification and the experience. In terms of negligence, we have 4D, that is duty. Once you take the patient, you have a doctor-patient relationship, you take in good faith that I will treat your patient. So this is your duty for the giving standard care to the patient. Dereliction means breach or deviation from the standard of care. Once you have admitted the patient, and if you have not done the proper standard care, it means you are breaching that contract with the patient and duty of care. And as a result of your treatment or malpractice or negligence, if there is direct damage as a part of your malpractice, and then this damage should be a direct cause, not the indirect cause. You have one patient admitted, after 6 months he complained with another complaint that I was admitted 6 months back and this is bad. So the most of the patient, the cases they are on dereliction and the damages.
and not on the first one. There are two act of commission and act of omission which result in harm to the patient. The harm can be physical, mental harm, or financial loss to the patient or the relatives. Incorrectly. I give example of crossing the red light. You are jumping the red light. You know it that I should stop it. Some like wrong drug or harmful overdose of the drug has been given. For example, a nurse, you are written 0.5 and nurse has given 5 milligram. Overdose can be given. Faulty technique, the leakage of the fluid is there. You have given certain drugs which have to be given very slowly and in saline or as an infusion that has been given. One nurse gave potassium chloride as a bolus, the patient expired, and this was in the court. That has to be, the doctor has not mentioned as a slowly IV infusion. The slides are not moving up. Slides are not moving. Now moving? So not moving. Slides are not moving. Now moving? No, sir. I don't know what has happened today. Now this slide is visible? So this is the first introductory slide only. Oh, I thought my slides are moving. अब देखिए. It is okay, sir. Now it's visible. Moving. Going. Go ahead. So it means that act of commission, act of omission. Act of commission means when a drugs has been given wrong drugs, harmful drug, overdoses, just like 0.5 had given by mistake 5 mg. Chloroquine, one case is there that it was given IV, it has to be given as a quinine. Similarly, faulty technique, leakage of the fluid is there. There are cases of amputation because of the leakage of the fluid. And iatrogenic perforation, somebody doing endoscopy, and during endoscopy there is perforation of the esophagus and perforation, even the ENT cases they are there. We are doing examination, the perforation of the eardrum. Surgery on the wrong side, left kidney was to be removed, right was removed. Even the dental surgeon, they are facing these cases. One tooth, the normal tooth was removed. And work beyond skill, hysterectomy by a surgeon. All these, they are surgeons, they are doing the hysterectomy. And now the places where gynecologists, they are available and this is come in their domain. Earlier, there was no lack of gynecologist or there was some problem. So, and similarly, anesthesia given by surgeon. Where anesthetic is available, why the anesthesia was given by a surgeon? Even I know the couple obstetrician and pediatrician they are giving spinal and gynecologist they are doing performing cesarean. So once a case was happened, patient went to shock, spinal shock. So that was a case that you are going beyond your skill. Act of omission means act not performed as should have been performed by a ordinary skilled doctor of the same knowledge and experience. You are not attending the patient, you admitted the patient, you have gone out of station and you have not mentioned, you failed to give standard care, failed to examine or manage carefully, and no consent was taken. Consent should be a procedure specific consent, it should be valid, consent should be written, valid consent should be there, and it should be procedure specific. Every procedure will have different consent. And you have not hospitalized the patient. A child was seen, a newborn was seen, has jaundice, and you have forgotten to tell you come on 4th, 5th day, and the child came on 7th, 8th day with 25 milligram of bilirubin. The child had developed cholangitis and went to court that I was not advised for follow-up. No, doctor is not hospitalized. Failure to follow up. Then omission of the recommended vaccine. These are vaccine, they are earlier these are the compulsory vaccine, they are recommended for you, and these are the optional vaccine. You have to give your advice, you have to discuss one-to-one with the patients. That what are these vaccine, they are as per the guideline of the IAP. Now these are the cases. This was the case failure to manage carefully.
this child came in as a respiratory distress. His case was pneumothorax, and the consultant on the round, he advised intercostal drainage immediately. The resident, they wrote that bring this tube, bring that tube, and other thing, and they were not able to procure. And the father went from shop to shop. He managed it after a few hours, and by that time the patient expired. It was alleged that it is not the cause of death, but the facts remain that the treatment prescribed was not provided, so compensation awarded by district forum was upheld by the Supreme Court also. Another case, this was a pediatrician in Rajasthan. He admitted a case of severe gastroenteritis with severe dehydration, and then he went to other place. For example, even Jodhpur he went, and he did not delegate duty to any of his colleague. He is, I will say that is compounder, untrained, unqualified assistant. They were looking after the patient. Patient went to severe dehydration, into shock, and when they asked repeatedly, where is the doctor? So one of the staff told doctor has gone out of station. Then he say, okay, send this patient to nearby hospital. It was sent. By that time, patient went to irreversible shock and patient died. So these were the comments of the court. No doubt the medical profession is a noble profession, but there is greed for money and profit industries. And this is culpable negligence. And 3 lakhs were awarded against the doctor. Similarly, this is one, Agar Samira Kohli Vanchanda, this is also judgment. In this case, a lady, unmarried lady, has got excessive menorrhagia, and she was advised to go for diagnostic laparoscopy. Patient was admitted, and gynecologist found that on diagnostic laparoscopy there was extensive endometriosis, and she did hysterectomy. She did not take the consent. This lady was unmarried and said that my consent was not taken. Now I got no chance of marriage. I no chance of producing children, and this was against the doctor. The doctor said that this was a continuous process. I have saved the money, saved the time, but the court said that the consent should have been taken for the second procedure. You have taken consent for the diagnostic laparoscopy, not for the therapeutic removal of the uterus. So unauthorized additional surgery may be saving time, pain, suffering, life, but it can't be taken as a defense in the court of law. Only exception can be a life-saving when they have preserved the health of the, like roadside accident or any other thing life-saving, where that you can avoid taking consent. So this is when the act is undertaken without prerequisite care. This is recklessness. The act of commission which is beyond one competency, treating another specialty cases, doing hysterectomy, blood transfusion without cross-matching, and closing wound without examining living sponges and the instruments also. Criminal negligence. If the act of negligence is so rash that result in a grievous injury or the death of the patient, it may amount to criminal negligence, and negligence is beyond compensation. It is prosecuted in the criminal court, and earlier it was in IPC 304A, now in BNS section 106(1). What this? Now, this court judgment, a plastic surgeon is charged with section 34A, 38-year male operated for nasal deformity, cardiac arrest on the table. After resuscitation, shifted to tertiary hospital. On postmortem, it was found that there was the size of the endotracheal tube was not enough, and the patient aspirated. So this was again a case of gross negligence and case of criminal negligence. Similarly, other example, they are amputation of the wrong finger, operating on the wrong limb patient, removal of the wrong organ, living sponge instrument, and application too tight plaster, splintage causing gangrene. And there are many cases in the court where this gangrene, amputation of the finger and the toe has to be done. So this is again a gross negligence. Contributing negligence. This is the negligence on the part of the patient in pediatric patient attendant level.
and failure to follow instruction, you advise the patient that you come after follow-up, patient didn't come. Failure to take medicine, you advise medicine, patient go to alternative medicine like homeopathic or some other medicine, and patient got worsen, then he report that doctor didn't give me proper treatment. You advise some investigation and patient didn't follow it. So contributory negligence must be specifically pleaded in the court of law from the very beginning of the case. This is a defense in your case. This is a case alleged that a child was admitted as a PO, and this was initially treated, typhoid treatment started, but subsequently found that there is pancytopenia. The doctor advised to go for a bone marrow to rule out the leukemia. But the patient father denied, and they have noted in the file, they have documented repeatedly 3 times that advised bone marrow but not advised. Patient started bleeding, he was referred to other hospital, ultimately bone marrow was done. It turned out a case of acute myeloid leukemia. Now the court says the complainant has not been able to show what the respondent, that is doctor, should have done, and he has not done. So this case was admitted. So this is not a case of medical negligence. Then failure to get investigation admitted on advice, taking treatment from other system of medicine, failure to consult specialist referred to, you advise to higher center, and the patient did not go there, patient went to some other alternative medicine. Then failure to refusal to take medical treatment, left against medical advice. This is the right of the patient to refuse your treatment, to partly refuse treatment, you go against advice, this is a right, but you should document in the file that this is the condition of the patient, but still the patient want to go against medical advice. So maintain a proper record for this. Then large number of visitors leading to infection. In a nursery, if large number of attendants they are coming and they got the infection and child got septicemia, and it was found that the hospital doesn't have a infection control committee and like that, but the fault was many visitors were there. Repeatedly they were asked, please don't come here. Failure to report for obvious complication one. You discharge a patient, for example, a case of jaundice also. And so once you have said that please come after 3-4 days after discharge, and we want to follow up, but the patient did not turn up, patient developed complication, went to some other other doctor, other hospital and died. So this is not a medical negligence. The res ipsa loquitur. It means the damage is so obvious that situation speaks for itself. And onus here, the onus of disproving of the negligence is on the defendant, on the doctor. The other consumer case, the onus lies on the complainant. He has to prove that doctor was wrong, doctor have doing malpractice, he was negligent. But here, in such a case, it is the onus lies on the doctor to prove that he was not negligent. This again, in this case of res ipsa loquitur, pneumothorax after diagnostic FNAC of breast lump. One was doing FNAC for the breast lump and it punctured the pleura, patient developed pneumothorax, and suddenly patient has severe pneumothorax. There was no time, patient expired. So this is case of gross negligence. Severe necrosis, infection, gangrene, injection site, venipuncture site. Some patient they have been giving this vincristine, vancomycin, other drug, not slowly, their leakage of the drugs is there, develop gangrene. Rupture of the eardrum after syringing, meningitis after LP. Some patients they are doing a lumbar puncture and the CSF report comes out to be normal, but after some time the patient develop infection, and the cause is they will relate that this was because of the sepsis during the lumbar puncture. Then this is wrong diagnosis in spite of diligence. This is opposite to negligence. In such cases, if the doctor has taken all the care, but still complication occur due to improper diagnosis, then this is not a negligence. Okay, you have treated the patient as per the protocol, as per the guideline, as per the test book, and he is bound, certain thing bound to have a complication. You mention in record and you properly document it. Patient, you timely refer the patient to higher center or take second opinion from your colleague, then it is not a negligence. So a wrong diagnosis, unless it is genesis, is in the negligence or incompetence,
it can't be considered as a deficiency in the service. Again, this is a case of not a negligence. This is surgery for shoulder dislocation. Pain persisted. This was an accident, and it was an open reduction for the shoulder joint was done, but the pain persisted. And this patient, he went to around 10 doctors in 1 month that my wrong surgery has been done. But every doctor said that surgery is okay, and this was due to nerve damage to the axillary nerve during the accident. But here the fault was of the doctor that he did not mention in the file that this pain is due to axillary nerve damage. So court in this case said that it is high time for doctor to write correct notes in the operative file in discharge summary. Okay, and here the 10,000 cost of the said deficiency was found. Although there was no fault on the part of the doctor, but he did not mention it. Just like many cases of ROP are being in these days in the court of law, you just mention in the discharge card, advise ROP screening. So these are which condition I am not discussing, what are the criteria, all these things. And you follow just, we have told the patient, communicate to the patient, advise to the patient. Again, this is a Pyarelal Verma Ashok Gupta cases. Prostate was removed, biopsy reported benign, no malignancy was seen, complication developed after 6 months. And review of the biopsy as PGI Chandigarh showed it was cancerous. The State Commission said there can be variation of the expert report and opinion, and it cannot be held as a case of negligence. How to avoid wrong diagnosis? And keen eye for unusual, high index of suspicion, frequent review your patient whose picture get misleading, and quick referral to your colleagues and specialists and super specialists, and don't hesitate in doing investigation, liberal diagnosis to be on defense side, and second opinion. This is very important judgment. Jacob Matthew case is act of negligence to be viewed as a criminal negligence, inviting criminal prosecution, which would have to be of negligence gross and must have 2 criteria. The doctor did not possess the necessary skill required, or if he possessed the required skill, did not exercise that reasonable competence and the skill. And the act committed ought to be such that no medical profession in ordinary sense would have committed this. So they are 2, and the test of medical negligence in criminal cases, on consumer protection cases, act are to be judged on different parameters in the court of law. Thank you very much. Yeah. So we have, in such cases, we should, if you see the case of Rajasthan, Dr. Archana Sharma, a gynecologist, last year she committed suicide because the FIR of 304A was lodged, and in that there is punishment for the life imprisonment, this death. So she was not knowing the law. Even our colleagues were not knowing the law. Even if there is death due to medical negligence, then the punishment is in the BNS 106 is 2 years, and this fine also. So there is no death penalty there. It means we have to be sure what is negligence, what is not negligence. We should know different IPC. There are certain BNS, old IPC, they are in our favor for protection. So this is the main motto, objective of our webinar, that we should know whether we are negligent or we are not negligent. This is and we should make aware all our pediatricians. Thank you very much. Thank you, Dr. Satish, for the nice presentation. This is rightly said the lines. Whenever you get the notice from the patient, from the lawyer, from the court, don't get frightened. Don't get frightened. Consult your colleagues, consult your friends, consult your medical legal friends. They will guide you the proper procedure to deal with it. Nothing to worry, nothing to worry. ये तो रोज आते हैं, रोज आएंगे, कोई चिंता नहीं है. उसको ठीक तरीके से जवाब दे देंगे तो बंदा वहीं पे चुप हो जाएगा. वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा. उसे पता है कि ये ठीक बंदों के पास बैठा हुआ है, इसके लॉयर ठीक है, इसके कंसल्टेंट ठीक है. ही वोंट प्रोसीड फर्दर. वो आगे करेगा भी तो हमारे पास जवाब ठीक होने चाहिए. इफ यू विल फाइट प्रॉपरली, हमारा मजाल नहीं है हमें कोई हमारे ऊपर अगेंस्ट कोई केस बन जाए. इफ वी फाइट प्रॉपरली with the right arguments. Thank you. Any questions from the audience? Comments of Dr. Arun Gupta, sir.
Right, Arun sir, are you here? Yeah. So बहुत your valuable comment, sir. Namaskar, sir. एक्चुअली वेरी डिटेल्ड डिस्कशन एंड वेरी वैलिड पॉइंट बाय बोथ द स्पीकर। एक्चुअली मुझे हर स्लाइड में कुछ ना कुछ कमेंट बोलने को मिल रहे थे, पर मैं ऐसे बोलूंगा तो एक आध घंटा लग जाएगा मुझे। एक्चुअली हर जगह आपने जो एग्जाम्पल केसेस दिए, इन केसेस में सब में बहुत अंदर की स्टोरीज भी बहुत सारी थी। तो सुरेश गुप्ता, जैकब मैथ्यूज करके, तो दो तीन बातें मैं बोल देता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही है यहाँ पे। तो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। ये मेरा 10th ईयर एज ए प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, 10th ईयर। और जब मैंने स्टार्ट किया तो हम लोग वी आर गेटिंग 15 to 20 केसेस a month. Now we are getting 60 to 80 cases in a month. मतलब विद इन a span of 9 years number of cases has spiraled down so much. नंबर टू, जो अब जो केसेस फाइल करते हैं ना, पहले क्या करते थे लोगों ने, पेशेंट ने हैंड से लिखा और हमें भेज दिया। अब प्रॉपर कंप्लेंट ड्राफ्टेड होती है बाय अ लॉयर। तो मतलब वो उस तरफ कोई ऐसा बैठा है जो कानून का जानकार है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि द पर्सन हु फाइल्स द कंप्लेंट नोज ऑल द लॉज, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉज। तो इसीलिए जो ये डिस्कशन शुरू हुआ है, अच्छा है कि आपको लॉज का पता तो होना चाहिए। आई सीन सो मेनी केसेस इन माय काउंसिल वेयर पीपल, डॉक्टर्स आर फाउंड गिल्टी जस्ट बिकॉज दे डिडंट नो द सर्टेन लॉज। दे डोंट, इट्स नॉट एक्चुअली दे कमिटेड सम मिस्टेक। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको लॉज का पता होना चाहिए। तीसरा, हमसे ज्यादा केसेस कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल में भी जस्ट इरेज द नेम ऑफ डॉक्टर, वी डोंट गिव एनी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन टू द पेशेंट। तो उसको अगर एक्चुअली कॉम्पनसेशन चाहिए तो वहां जाना पड़ता है। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। अभी भी जो बेसिक फंडे हैं बचाने के, वैक्सीन को, अपना कंप्लेंट को रोकने का, स्टिल से द कम्युनिकेशन इज स्टिल द नंबर वन। आई हैव सीन सो मेनी केसेस हमारे जो काउंसिल में आते हैं, उनको प्राइमरी कंप्लेंट होती है डॉक्टर साहब ठीक से बात नहीं करते थे। ही वॉज वेरी रूड, ही वॉज एपैथेटिक, जस्ट टोटली नॉन कंसर्न। आते थे तो हबड़ दबड़ में रहते थे, फोन पे बात करते थे और हमारी बातों का जवाब नहीं देते थे। तो दैट एक्स देम सो मच। और मैंने देखा कई जगह रिजल्ट आए कितना भी खराब हो, अगर आप उसको कम्युनिकेशन अच्छे से हैंडल कर लो, थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटीट्यूड हो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात कर लो, तो कई बार लोग समझते नहीं है। तो आपका, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं देते, पेशेंट अपना 2 साल भी खराब करता है, हमारा चक्कर भी लगाता है, पैसे भी खराब करता है, टाइम भी खराब करता है। क्यों? क्योंकि इस डॉक्टर को टांगना है मुझे, जीत के उसे मिलने वाला कुछ नहीं है। पर से इसको टांगना है कि यार बदतमीजी से बात करता था। तो इस भाई, मुझे लगता है कि अगर मुझे पता है उस समय वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हमें भी कई बार नहीं होता कंट्रोल, पर करेंगे तो आप आगे जाके बचेंगे। दूसरा, अगर ये इस काइंड ऑफ वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट अगेंस्ट लिटिगेशन, पर अगर फंस ही गए, मान ली हो ही गया, तो बचाएगा खाली डॉक्यूमेंटेशन। इस बारे में हम लोग रिपीटेडली बोलते हैं। हमारे पास काउंसिल में मैं सिर्फ फाइल्स को देखता हूँ, अगर उस फाइल्स में जो डॉक्यूमेंटेड हम उसको मान लेते हैं, आपने किया हो चाहे ना किया हो, और पेशेंट कुछ भी कहता है। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, पेशेंट को आपके अगेंस्ट केस प्रूव करना है आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे। जस्ट थिंक ऑफ इट। सारे एडवांटेज तो हमारे पास ही है, और डॉक्यूमेंट पे तुरंत ही देने होते हैं। अगर आप पेशेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है तो आपको 3 to 5 days का टाइम मिलता है देने के लिए। आप अपने डॉक्यूमेंट ठीक कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं फैब्रिकेट करना है, बट आपको ठीक कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं डाले तो। नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर नोट्स, पेशेंट हैज फाइल ए केस अगेंस्ट यू एंड प्रूव इस केस अगेंस्ट डिपेंडिंग ऑन योर नोट्स। उसके बाद भी हार जाओगे तो क्या कर सकता है कोई? इसका मतलब आपने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रही कि आप नोट्स नहीं डाल रहे। हम हमेशा कहते हैं करो ना करो भाई, लिख जरूर दो। जो लिखता है वो माना जाता है। ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी करेंगे आप करोगे सारी चीजें। बाकी एक बीच में कोई बात चली थी कोई कि नर्सेज अगर रॉन्ग इंजेक्शन देती है तो क्या होता है। देखो, जिस भी सेटअप में आप काम करते हैं वहां का जो स्टाफ है, ये एक लॉ कहता है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और आपकी जिम्मेवारी है टू मेक श्योर दैट योर स्टाफ इज क्वालिफाइड। नाउ इफ योर स्टाफ इज क्वालिफाइड एंड यू हैव गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग, नाउ योर स्टाफ डज समथिंग रॉन्ग, देन यू आर नॉट लायबल, बिकॉज योर स्टाफ इज क्वालिफाइड and your instructions are proper. But if your staff is not qualified or your instructions are not proper, and then your staff does say something wrong, then you are liable. तो ये बहुत क्लियर है, खासकर हम लोग अगर छोटे सेटअप में जो लोग जाते हैं नर्सिंग होम्स वगैरह, अगर आपका वहाँ पे जो नर्सेज हैं या जो आरएमएस क्वालिफाइड है, और बहुत कॉमनली ऐसा होता है, तो आप बड़ा केयरफुल रहिए। कुछ भी जो होगा जिम्मेवारी आपकी होगी। और मतलब बातें तो बहुत सारी, एक मेरे को आखिरी में डॉक्टर मेरे ख्याल से सतीश सर कह रहे थे 308 के बारे में। तो वो 304 ये थी पहले अबाउट क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बारे में डॉक्टर्स पे लगती थी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर कहते हैं वो। उसमें सुरेश गुप्ता और जैकब मैथ्यूज 2 केसेस थे जिसपे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में बहस चली थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 304A एप्लीकेबल नहीं होगी अनलेस द नेग्लिजेंस इज ग्रॉस, और सेकेंडली अनलेस ए
प्रॉपर मेडिकल बॉडी सेज देयर समथिंग प्राइमा फेसी रॉन्ग, तो उसके बिना एफआईआर नहीं होगी। अब 304A के बारे में कुछ दिनों पहले हमारे पार्लियामेंट में ऐसा कहा गया था कि डॉक्टर्स को क्रिमिनल नेगलिजेंस के प्रिव्यू से बाहर निकाला जा रहा है। तब सर श्योर 304 है सर, 304 है, 304 304A ए ना, नहीं, 304 4 304A नॉट ए, 304 नहीं 304A है वो, अब नहीं पढ़ना नहीं सर, दोबारा। हाँ 304 ए 2 years है, 304 10 नहीं मैं years। पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304A जो लगता है, ठीक है, उसमें कोई भी नेग्लिजेंस करते, इट्स नॉट अबाउट मेडिकल स्पेसिफिक। नहीं नहीं आप सर, नहीं 304 है सर वो, चलो कल्पेबल ठीक है, होमिसाइड, हाँ नॉट चलो अमाउंट, थोड़ा हाँ मैसेज ठीक ना चला जाए सर। चलो उस पर बात कर लेंगे। जी जी अब वो ये कहते हैं कि एनी यू यू डू यू डू समथिंग बिकॉज ऑफ योर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, रैश एक्ट, समवन डाइज, इट्स नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, देन यू आर अंडर इसका 304 है, यू कैन बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन, ये था। अब इन्होंने 106A से रिप्लेस कर दिया गया। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। पहली बात, 304A वाज नॉन स्पेसिफिक, एनीवन कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस एक्ट कैन बी बुक, लाइक ट्रक ड्राइवर, छत गिर जाए, पेड़ गिर जाए, ईंट गिर जाए, मेडिकल का नहीं था। तो मोस्टली केसेस आते थे अलग तरह के, जज के पास एक आध केस आते थे डॉक्टर्स के, तो देवर यूजली लीनिएंट के डॉक्टर है चलो काम कर दिया। अब 106A में मेडिकल प्रोफेशन को डिफाइन कर दिया गया, नेवर कैटेगराइज्ड मेडिकल नेग्लिजेंस, जो पहले नहीं थी। नंबर 2, 304A में था इफ यू आर कन्विक्टेड यू विल गिवन आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट, तो मोस्टली इम्प्रिजनमेंट मिलता नहीं था, फाइन वाइन लगा के खत्म कर देते। पर अब इफ यू आर कन्विक्टेड द फाइन इज मैंडेटरी, सॉरी इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी, तो ये दूसरा खतरनाक काम हो गया। और तीसरा, ये एक डिबेटेबल इशू हर जगह, क्योंकि जो जैकब मैथ्यूज में जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, देवर विज 304A, उसका एक्सप्लेनेशन था कि इसको कैसे लेना। वो 304A चला गया, 106A आ गया। तो मेरी काफी जजेस से बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज से बात हुई थी मेरी लॉयर से, वो कहते हैं एप्लीकेबल होगा। मैंने कहा भाई तो 304A का एक्सप्लेनेशन था। अब वो वही नल एंड वाइड हो गया, पर उन्होंने कहा कि शायद वो कि वो 106A में इंटरपोलेट कर लेंगे इसको। तो 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एक बीच में जो हमारी जो जो स्टैंडर्ड नेग्लिजेंस की डेफिनेशन है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ देयर हैज टू बी डैमेज टू द पेशेंट, उसके बिना नेग्लिजेंस नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, कंसेंट का अगर इश्यू आता है, even if there is no negligence, there is no damage to the patient, and if your consent is not proper, then still you can be guilty. Consent is a legal valid requirement as per the contract. It's not about medical thing. किसी की बॉडी को आप उसके कंसेंट के बाद टच नहीं कर सकते। अगर आपने सब कुछ किया, सब कुछ ठीक हुआ, पेशेंट हेलर हार्टी घर चला गया, उसने बाद में कहा जी मेरा कंसेंट प्रॉपर नहीं था, स्टिल यू कैन बी बुक्ड। तो इनफॉर्म वैलिड कंसेंट अपने पे बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये सारी ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से दोनों ने एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे दिए, डॉक्टर JK शर्मा और डॉक्टर सतीश सर ने। तो दे आर वेरी वेरी आई थिंक वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी एलोबरेट। तो आई थिंक एनीवन वांट्स टू मेक सम कमेंट्स और एनी क्वेश्चन? Sir, in criminal negligence, in IPC, there is a defense even without even without consent. You are protected if you are doing an act in good faith and which causes death, and that is IPC section 92. So, in criminal negligence, there is defense. If even if consent is not there, then you are defended. And if with consent, it is section 88, and without consent, section 92. तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आपके पास बहुत प्रोटेक्शन है, लेकिन ये कंज्यूमर में आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब वो देखो जो आप कह रहे हैं वो मेरे का सेक्शन 36 हो गया है BNSS में वो। हाँ 30, हाँ और उसमें ना है नहीं, बताओ एक्चुअली। अगर आप देखो एनी एक्ट डन इन गुड फेथ, मेरी बात सुनना ध्यान से, एनी एक्ट डन इन गुड फेथ, आप इस लाइन को पढ़ो तो हमारा हर ट्रीटमेंट इन गुड फेथ में। मेडिकल में कौन सा बैड फेथ में होता है? फिर तो सारे के सारे आउट हो गए। नहीं सर, विदाउट कंसेंट का, विदाउट कंसेंट मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सर, वो अलग बात है, मैं उसकी बात, वो तो इमरजेंसी टोटली डिफरेंट है। देखो मैं बताओ, समझो लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ इज कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस। इंडिया में परमंत खटारा केस 50 साल पहले आया था, तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि गवर्नमेंट शुड मेक सर्टेन लॉज अबाउट मेडिकल। आज तक नहीं बने, 50 साल हो गए। तो हमारे जो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि पुराने जजमेंट थे जी, उसके जजमेंट थे जी, उसका जजमेंट थी, तो बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश ने बोला है, सतीश ने बोला है, इन्होंने बोला, क्या बोला JK शर्मा ने कि वो जजमेंट ये बता रहे हैं ना, कोई रिटर्न लॉ तो है नहीं। जब रिटर्न लॉ नहीं हो तो कॉमन सेंस बहुत काम करता है। तो आप जितनी बातें बता रहे हैं ना कि किसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है, तो अगर आपको अपना पॉइंट डिफेंस में
अब इमरजेंसी में आपने कर दिया मान विदाउट कंसेंट, तो यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट कि सर जैसा भी Yeah. जल्दी मैंने कर दिया, बात खत्म। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि लॉज नहीं है, रिटर्न लॉज नहीं है, तो कॉमन सेंस एंड पर्सनल डिस्क्रिप्शन मैटर्स अ लॉट। इसलिए हमें 10 केस को बार बार कोट करना पड़ता है, इसमें ऐसा कहा उसमें वैसा कहा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अगर आप कॉमन सेंस में करोगे, कंसेंट के बिना बहुत सारे केसेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट लॉ रिक्वायर्स कंसेंट, लॉ डजंट रिक्वायर रिटर्न कंसेंट भी। अगर आपने एग्री कर जाए पेशेंट कि हाँ मैंने बोलने में बात खत्म हो, रिटर्न कंसेंट हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम प्रूव कर सके कंसेंट था। क्लियर? तो ये है कि इफ इट इज रिटर्न, इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। इफ इट नॉट रिटर्न, व्हाट मैटर्स योर ग्रे मैटर, दैट इज कॉमन सेंस। सर मेरी एलएलएम की थीसिस में मेरा टॉपिक ही यही था कि अच्छा। उसमें था एनालिसिस ऑफ जुडिशियल अप्रोच इन फिक्सिंग लाइबिलिटी। एंड मैंने कंपैरिजन किया था कि उसमें आपका कंज्यूमर में क्या जुडिशियल अप्रोच है और क्रिमिनल में क्या जुडिशियल अप्रोच है। और उसका जो हमारा क्या नाम सार निकला था जिस था, वो ये था कि जो क्रिमिनल में आपका जो क्या नाम है टिल्ट ऑफ बैलेंस है इज टुवर्ड्स डॉक्टर, एंड कंज्यूमर में इट्स टुवर्ड्स पेशेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्रिमिनल में आपके पास बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने सेफगार्ड दे रखे हैं, और हमारा नेशनल मेडिकल लीगल प्रोटेक्शन डे बनाने का पर्पज यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे सेफगार्ड दे रखे हैं कि क्रिमिनल में अगर आपने बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम या बहुत ही ज्यादा किया है तो फंसोगे, नहीं तो आपको नहीं फंसना है। और इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको लॉ से अवेयर की जरूरत है, और कंज्यूमर के लिए आपको प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस की जरूरत है। तो अगर आपने आपके पास जैसे दोनों आपने चीजें देखा हैं तो होगा, आप बच जैसे जाओगे। एक दो केसेस थे, सुरेश गुप्ता और जैकब मैथ्यूज, 93 94 कंटिन्यूएशन 1-2 साल में केसेस थे। जी पहले सुरेश गुप्ता में सुरेश गुप्ता को अरेस्ट किया, 304A लगाई, पर उसको बेल नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस हटाया था तब तक। फिर उसके बाद 1 साल में जैकब मैथ्यूज आया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच तक गया। तब ये डिबेटेबल था कि अगर आप हर नेग्लिजेंस में डॉक्टर को अरेस्ट करने लगोगे तो काम कैसे करेंगे। तो सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट के बेंच ने ये कहा था कि भाई 304A जैसे ही वैसे रहेगी, इट्स रिमेन सेफ फॉर द एवरी पॉपुलेशन। पर जजेस लॉयर कमेटी का कहना था कि यू कैन नॉट हैव टू सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, एक के लिए लॉ ऐसे एक के लिए लॉ, लॉ तो वही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अलग से दिया था कि ग्रॉस होना चाहिए और मेडिकल क्रॉस ओपिनियन होना चाहिए। जैसे आपने बोला ना, क्रिमिनल में तभी जी हमें प्रोटेक्शन मिला, उसके बाद तभी पहले डॉक्टर राइट बहुत अरेस्ट होते थे, उसके बाद होने बंद हो गए, क्योंकि दो कंडीशन ऐड कर दी गई। अब कर दिल्ली दिया में अगर पुलिस ने किसी भी डॉक्टर के क्रिमिनल केस लॉन्च करना है, पहले दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भेजता है। बेहतर। Then first we examine the case. Unless we say go ahead, they cannot arrest a doctor. तो ऑब्वियसली डॉक्टर बच जाएंगे उसमें, क्योंकि वी आर एक्सपर्ट बॉडी, इसलिए प्रोटेक्शन है क्रिमिनल में। Thank you. Can we have some queries? यस सर। Yes, Thank sir. you. Excellent talks by both the experts, Dr. Satish Sharma and Dr. J.K. Gupta, and also very nice comments by Dr. Arun Gupta. So we are lucky we have so many experts here. And sir, my small query is that consent means even for OPD cases when they are very sick patients, sick in the sense that they have some grave problems and they are not hospitalized, but only in the OPD. So there also, do we need to take a consent for treating those patients? Sir, actually, if there is any intervention, no, and you are doing any maneuver, or if there is any intervention or any invasive procedure, no, then consent is necessary. But you have there is no such intervention or surgical, no. So, but condition is serious and you are treating patient as an indoor. So after taking patient or adopting patient as an indoor, then consent of the general prognosis and the risk, it should be there. But actually main in OPD, it is limited to procedures and many procedures related. Sorry. Right. Secondly, in the smaller towns where the physicians are practicing, pediatricians are practicing, they may not have an access to all the specialists within the area. And if the patient needs a specialist opinion and the patient is asked and does not take specialist opinion, in that case, is the doctor again liable that he communicated, but the patient has not taken the opinion or the specialists are not available within the vicinity? So in that case, if he keeps treating those cases, is he still liable if something goes wrong? Sir, this No, is, no, we have mentioned that it should be standard care as per your knowledge and experience and qualification. Whatever you have done, first aid, whatever treatment you have given, you don't have facility, you are not competent. So timely referral the patient to the proper higher center is your duty. If you are timely referred,
the patient after doing the first aid, whatever treatment is as per your competence, then it is not a medical negligence. Yeah. And if the patient after writing also does not go, then So this is called contributory negligence, which I mentioned that if the patient doesn't follow your instruction, not going, you are referred him to higher center, patient going to some quack, some homeopathic, some other medicine, you mentioned that in that I have referred so and so center, patient may, his will, he may refuse your treatment, he may take your treatment, this is will. As Dr. Gupta has said, this is right of the patient. Yeah. देखो कुछ भी आप एनी इंस्ट्रक्शन गिव, जस्ट राइट इट। Yeah, mentioned. उसके बाद आप बिल्कुल भी लायबल नहीं, अवेलेबल है नहीं है दाएं बाएं कुछ भी, उसके बाद अगर आपने उसको लिख दिया। और दूसरा ये भी, अगर आप पेशेंट आपके अंडर ट्रीटमेंट और आपके विदाउट विदाउट नॉलेज विदाउट कंसर्न वो सेकंड किसी से ओपिनियन लेता है, तो भी आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। पर ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, नॉर्मल है कि फीवर वेयर के सेकंड डे थर्ड डे फीवर बच्चे आते हैं बहुत सारे, बाप को वो इतना अर्ली स्टेज होता है कि इन्वेस्टिगेट कराना भी नहीं चाहते, आपको लगता है फ्यूटाइल है, पर आपको ये भी डर लगता है कि कल को पता कुछ हो जाता वाले इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। बेस्ट तरीका थर्ड डे फीवर का आप ट्रीटमेंट लिख दो, वायरल फीवर क्वेरी क्वेरी, इन्वेस्टिगेट लिख दो, लिख दो जो 4 दिन से, पर करवाओ मत उसको, बोले 4 दिन बाद देख लेंगे जी, राइटिंग में डाल दो उसके ऊपर। ये आपको तरीका बता रहा हूँ कल को बचने का। अगर कुछ होता है तो हमने लिख तो रखा ही था, उसको वर्बली कह दो। पर ये बात है कि कुछ भी लिख दो, अगर आपको लगता है भाई इसको जाना है नहीं जाना उसकी मर्जी है। अगर आपने रेफर किया, प्लीज मेंशन इन ओपीडी इसलिए रेफर टू फलाना डॉक्टर या रेफर फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। सर हमने टॉक्सिक को दिस, आई एम अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, हमने टॉक्सिक ड्रग दी है बच्चे को एंड आस्क्ड देम कि 1 महीने बाद दिखाना है विद द टेस्ट, एंड द पेशेंट डज नॉट टर्न अप। वो 3 महीने तक दवाई खाता रहा है, लेकिन उसने टेस्ट भी नहीं कराया और दिखाया भी नहीं। और कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इन दैट केस वंस यू हैव रिटन दैट गेट ब्लड काउंट्स डन, कम बैक आफ्टर 1 मंथ एंड द पेशेंट डज नॉट टर्न अप, तो उसमें हमारी लायबिलिटी तो नहीं रहेगी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, प्रैक्टिकली मान के चलो 60-70% केसेस होते हैं पेशेंट कभी फॉलो नहीं करते डॉक्टर जो बोलता है, मान के ज्यादातर केस होता है। ठीक है, आपके डिस्चार्ज पेपर में क्लियर कट लिखा होना चाहिए। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बोला कि इतने दिन बाद दिखाना है आकर के ये करा के लाना है, उसके बाद नहीं लिखा के लाता या नहीं कराता हम लोग फर्स्ट विजिट में ऐसे में मैं केस को खत्म कर देता हूँ, सिंपल। फर्स्ट में दोबारा, क्योंकि देखना पड़ेगा ना उसको। दूसरा ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग हमेशा मिस करते हैं, आपके पेशेंट को पता होना चाहिए इमरजेंसी में कहाँ जाना है उसको। अगर आपका पेशेंट आपने डिस्चार्ज कर दिया तो आपकी ड्यूटी टू केयर नहीं खत्म हुई जब तक पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो आपके पेशेंट को पता नहीं, अगर रात में 2 बजे प्रॉब्लम हो जाए तो आप तो उसका फोन पिकअप नहीं करोगे, कर भी नहीं सकते। तो क्लियर कट लिखा होना चाहिए इमरजेंसी में, अगल बगल के किसी हॉस्पिटल का नाम लिख दीजिए, प्लीज इन इमरजेंसी रीच दिस हॉस्पिटल इमरजेंसी। इवन आपके ओपीडी स्लिप्स में भी लिखा होना चाहिए कि आप तो रात में क्लिनिक बंद करके घर चले गए, उसके बाद होगा तो क्या होगा, तो फोन करेगा। तो उसमें कई केसेस में डॉक्टर्स ने केस लूज किया इसी बात को लेकर के कि रात को 2 बजे एंटीनेटल में किसी को फोन किया, उस गायनी ने फोन नहीं उठाया, डिलीवरी हो गई, एक्लिप्सिया में चली गई, सुबह उसने केस कर दिया कि मेरा फोन नहीं उठाया, डॉक्टर लॉस्ट द केस बिकॉज पेशेंट डिडंट नो व्हाट टू डू। अगर आप एंटीनेटल कार्ड में अपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवा दो कि इमरजेंसी में यहाँ जाना है, नंबर मत लिखिएगा, नंबर कोई नहीं उठा सकता रात को, प्लीज रीच दिया, तो फिर आप सेफ हो। तो ये सब चीजें आप लिख के चलो पहले। डॉक्टर गुप्ता सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। डॉक्टर गुप्ता सर, जैसे अपना MCI गाइडलाइन जो रूलिंग है 2002 की, और बाद में जो NMC की भी आई, तो वो बताता है कि रिकॉर्ड कीपिंग OPD में आपका नहीं रखना है और इंडोर में रखना है 3 years। ये क्लियर कट मेंशन है 1.3.1 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सर क्या है? मैं एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड गाइडलाइन 2016 आई है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आपको पूरी लाइफ रखना है। और सर इसके लिए मैंने अभी RTI डाला था, वो RTI मेरी पहुंचते पहुंचते सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन गई, और मेरी सर अभी परसों मैं दिल्ली में था और मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में मैं गया हूँ, और मेरी जज साहब से बात हुई, डॉक्टर हीरालाल जी से, तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि RTI के स्कोप से बाहर है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन वो करेंगे नहीं, अब आपको सीधा हेल्थ सेक्रेटरी के पास जाना चाहिए। तो सर इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या चीज बनता है? 2-3 बातें हैं। जो MCI कोड ऑफ एथिक्स 2002 था, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी, वो इतना आउटडेटेड हो गया था कि उसको बहुत पहले रिवाइज करना था, उन्होंने किया नहीं। 2023 में NMC के ये लोग लेकर के आए, और आते वो 1 महीने में उड़ गया, वापस रख देगा एबेंस में। आपको पता है क्यों रखा गया, वी ऑल नो। जनरिक मेडिसिन का इशू था, वो बड़ा फार्मा लॉबी का चक्कर था, और उस वक्त 2 साल हो गए, दोबारा आए नहीं।
ठीक है। जी ये तो एक सर अलग सवाल है कि तो इस अभी भी स्टिल वी आर गवर्नड बाई कोड ऑफ एथिक्स 2002, 23 साल बाद वो नया नहीं बना, नया भी एप्लीकेबल नहीं। अब जो रिकॉर्ड कीपिंग की बात है मेरे ख्याल से ये सब ये कंज्यूमर कोर्ट और ये शायद 3-3 साल बोलते हैं आईपीटी के लिए ना, और दिल्ली मेडिकल काउंसिल में 3 years तक अलाउड है। जो ओपीडी का रिकॉर्ड के बारे में अभी भी शुड है, ये नॉट मस्ट है, पर हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप रख लो, तो रखने का तो कोई फायदा क्या है? नहीं आपके सर, अपने सर मेरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की मैं बात बता रहा हूँ, पूछ रहा उस पर भी आ रहा हूँ पहले, जी बाकी लोगों की नॉलेज के लिए ना। अब वो कहते हैं ओपीडी में शुड भी, इवन बाकी मान लो सपोज आईपीडी में रखा और आपने नहीं रखा, सपोज आपने नहीं रखा फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? थोड़ी कि आप इसलिए लायबल हो जाओगे। प्रॉब्लम है कि आप डिफेंड कैसे करोगे कल को? आपको यही हो जाएगा ना, आपने रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय क्यों किया? तो अगर आपको, इसलिए कहते हैं एडवाइजर, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक की बात है ना, अगले 50 साल में नहीं हो सकता। बोलना बड़ा आसान होता है सर, इंडिया में हो नहीं नहीं सकता है सर, क्या? नहीं नहीं सर, मैं नहीं, इसलिए कह ये रहा हूँ। मैंडेटरी, मेरी बस सुनो सुनो सुन लो, ध्यान सुनो। दो बातें, एक तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, दूसरा थ्योरी में कुछ भी लिख दे। अब एमसीए कुछ भी लिख दे, ये अभी जो आया था इनका 1 महीने में उड़ गया ना। जो इतने, जो चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल नहीं, कैसे कर लोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड कीपिंग एंड मस्ट फॉर लाइफ, कैन यू इमेजिन दिस थिंग इन इंडिया? तो यूरोप में भी नहीं, कहीं भी। इंडिया में जितने डॉक्टर, इंडिया इज नॉट दिल्ली, इंडिया एवरी गांव, इंडिया एवरी स्ट्रीट, एवरी फिजिशियन, एवरी डॉक्टर, जहां लाखों क्वैक्स को हम रोक नहीं पा रहे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आएगा जरूर, एडवाइजरी हम सबके भले के लिए, आपके अपने भले के लिए, आपने डेटा रख लो, पर इट्स नॉट मैंडेटरी, इट विल नेवर बी मैंडेटरी। सर एक्चुअली कुछ लिटिगेशंस में इवन इन, जिसमें मैंने एक केस लिटिगेशन फेस किया है, उसने रेफरेंस लगाया हुआ है कि सब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, इनको लाइफ रखना चाहिए। चाहिए तो ना, हमने, चाहिए तो बहुत कुछ चाहिए, नहीं मस्ट नहीं वो नहीं है। सर, सर उसका उसका रिपरकशन क्या हो रहा है? रिपरकशन ये हो रहा है कि जो लोग ओपीडी से पर्चा बनाते थे हैंडमेड, है ना, और जिन्होंने शिफ्ट किया था ऑनलाइन पर्चा, है ना, फिर ऑनलाइन पर्चे से फिर से ओपीडी में आए वो, क्या नाम है, प्रिस्क्रिप्शन में, हैंडमेड प्रिस्क्रिप्शन में। क्योंकि क्या ना कि और क्या नाम, लाइफ लॉन्ग की लाइबिलिटी कोई कैसे रखे? नहीं नहीं, कहीं और नहीं है। इस, अब मैं कह रहा हूँ ना, देखो मेरी बात सुनो, बहुत सर वो ऐसा। गाइडलाइन में है सर, वो लीगली बाइंडिंग है अरे नहीं है, लीगली टू बाइंडिंग नहीं थाउजेंड, ये है। चार एमसीए, सर। वी आर बाउंड ओनली बाय एमसीए कोड ऑफ एथिक्स। उसके अलावा दुनिया भर में कोई कुछ भी बोलता रहे। सर इसीलिए तो मैं गया था वहां पे सेंट्रल नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, कमीशन तो में। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ नहीं हाँ है ना, जी। बात करता हूँ। हमारे पास तो रोज महीने में 80 केस आते हैं। वी आर जस्ट बाइंड अबाउट एमसीए कोड ऑफ एथिक्स, अगर वो नहीं कहती तो बाकी तो एडवाइजरी तो बहुत है, ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, जिंदगी में अगले जन्म में रखना चाहिए। पर इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना। एमसीए कोड एथिक्स बोलेगा तो रखेंगे फिर, अभी नहीं है। सर, सर मेरे को जो वहाँ पे सीएससी के जो क्या नाम प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया था, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि साहब जो वहाँ पे आपके सेक्रेटरी हेल्थ हैं इसमें, वो है क्या पुण्य सलिल जी हैं, पुण्य सलिल श्रीवास्तव जी, कह रहे कि एक उनको मेल डालिए और एक पर्सनल डेलीगेशन जा करके उनसे रिटर्न में अगर ये मांग लें आप लोग, क्योंकि आरटीआई के स्कोप से बाहर इंटरप्रिटेशन, आरटीआई में आपको केवल कॉपी दे देंगे वो, और मैंने बहुत कोशिश किया, तो उसमें ये कि मैं अगर आपको कोशिश बता रहा कर हूँ लें। ना, जी ऐसे तो देखो अपनी लाइफ को हम कॉम्प्लिकेट करे जा रहे हैं। आप एमसीए कोर्ट ऑफ एथिक्स कर लो, उसके बियॉन्ड ना एनएमसी जा सकता, ना दिल्ली मेडिकल काउंसिल का, ना कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता। बाकी तो बहुत कुछ कहने को है, उसके बियॉन्ड कोई जा ही नहीं सकता। इफ यू कोट दिस कि सर वी आर बाउंड बाय दिस एथिक्स, इसमें नहीं लिखा तो अब तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं सब इसका लोग मतलब डिफेंस सर तो ये है देगा, कि हाँ। केवल जो ओपीडी वाला पेपर है वो दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड है फिर उस हिसाब से तो। हाँ गोल्ड देखो स्टैंडर्ड इसमें बिल्कुल। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ क्या है, ये एडवाइजरी है कि इवन ओपीडी में आपको 3 साल का रिकॉर्ड रखना है। मैंडेटरी नहीं है, अभी भी शुड भी है, क्योंकि हम्म। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आईपीडी का मैंडेटरी है, ओपीडी का मैंडेटरी नहीं है। अब अगर इसमें हम फिर भी कहते हैं अगर रखोगे तो आपके डिफेंस के लिए, कल को ये बंदा सामने क्लेम करता है, आपको इसलिए पैरालाइज नहीं कर सकते हम कि आप ओपीडी का रिकॉर्ड नहीं रखते। और दूसरा सर सर, इसका सर ओपीडी में यूजुअली हम देखा, पेशेंट देखा, हमने प्रेस्क्रिप्शन बनाया और यूजुअली पेशेंट को ही दे देते हैं, हम कोई हाँ ठीक सेकंड है। कॉपी तो यूजुअली रखते नहीं है। हाँ हाँ, तो वही है तो ना? मैं कह रहा हूँ, आप रखते नहीं हो, कल को हम आपको मान लो सपोज कोई केस होता है, ओपीडी का पर्चा लेके आता है, ठीक है, आई कैन हम्म। नॉट प्रोसिक्यूट यू ओनली इन द बेसिस बिकॉज आपने रखा क्यों नहीं। पर आप राइट। सपोज वो फैब्रिकेट करके ले आते हैं, कहीं हमने देखे हैं ओपीडी में फैब्रिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन भी होते हैं, आजकल फोटोशॉपिंग हो जाती है, वो तो फिर हमें हम्म। बड़े तरीके से पकड़ना पड़ता है। पर अगर आपके पास कॉपी है उसकी सपोज, तो आपके डिफेंस के लिए ठीक है ना ये हम कह रहे हैं। इसमें तो नहीं रखोगे तो हम्म। नहीं तस्वीर, फिर आपको उसके डॉक्यूमेंट पे आप अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, जो उसका डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, ऑल्टर्ड भी हो यस सकता यस। डॉक्टर अरुण गुप्ता, इसका मतलब तो रोज जो 150 पेशेंट देखता है, रोज 150 फोटो कॉपीज करके जमा करके अपने पास रखेगा, तो महीने के एंड में तो हजारों कॉपीज हो जाएंगी और एक है। हाँ साल में पूरा कमरा भर जाएगा तो उसका। तो 150 पेशेंट देख रहे थे, 5-7 पेशेंट पर डे देखो मेरे जैसे 150 देखते क्यों सर आप?
जिनके पास अब आते हैं जो सर 150 पेशेंट रहता है, ही कैन अफोर्ड है फुल टाइम अकाउंटेंट जो हम बैठ के डालता रहे इसके अंदर। सर इसका सर मैं एक बताना चाहता हूँ सॉल्यूशन। सर एक मेरे मिनट सर, एक मिनट गुप्ता सर, जी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ, अभी जस्ट मैंने डाउनलोड किया है फिर से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसमें आपका पेज नंबर 22 पे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन, मैं उसकी लैंग्वेज पढ़ के सुना रहा हूँ। हैंस ऑल रिकॉर्ड मस्ट कंपल्सरी बी प्रिजर्व्ड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन एवर। सर ये मस्ट वर्ड लिखा हुआ है सर, सर, क्यों ढूंढ ढूंढ के लोग, केवल गाइडलाइन ही है। अब मैं कह रहा हूँ क्यों ढूंढ ढूंढ के लोगों को डराते रहते हो? सर मैं नहीं डर मैं सर, अरे छोड़ो सर, ये कंप्लेनेंट लगा रखे हैं सर, हम लोग को इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कंप्लेनेंट जब फिर केस ये होता फिर है ये ना, फिर ये फिर ये फिर ये सुनो मेरी बात, फिर ये कहते हैं 3 साल के लिए, फिर क्यों कहते हैं अगर लाइफ लॉन्ग है सर इसीलिए देन वाई मैंने 3 आरटीआई साल में, 2 साल? सर आरटीआई में मैंने यही सब 6 पॉइंट उठाए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया हमको। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट जो होता है ना, वो हमसे ज्यादा लॉ जानता है। अरे सर ये हमारे केस ऐसा में भी ऐसा है ना सेम कि चीज, सरकार तो इसको सर गाइडलाइन, हमको रास्ता, हाँ Sir, तो IPD सरकार for में ऐसा 3 years and किसी OPD for किसी lifelong. किसी किसी बंदे ने कुछ भी निकाल दिया। और ऐसे तो अब आपने पढ़ा, हमें तो पता नहीं, हर डॉक्टर हर लॉ थोड़ी पढ़ सकता है, पर एमसीए कोड ऑफ एथिक्स के आपको बियॉन्ड नहीं जाना है, उसकी बियॉन्ड कोई प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं डिफेंस वही ले रहे हैं सर, लेकिन कंप्लेनेंट तो लेके आ रहे हैं। सर लाइफ मेरे लॉन्ग केस में रिकॉर्ड आया कौन है। रखेगा बताना जरा। डॉक्टर अरुण, हाँ जी सर एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दे देता हूँ, हाँ और मेरा हैंड रिटन ही कॉपी हो जाता है मेरे मेमोरी में, क्लाउड में। क्लाउड तो में, ठीक है। पेशेंट तो वो हैंड रिटन लेके जा रहा है, और लेकिन मेरा करो। साथ के साथ मेमोरी में जा रहा है। अभी मेरे पास पिछले 8 साल का है रिकॉर्ड, ठीक है, और अगर मैं उसका एक्सेस पेशेंट को भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, नहीं देना चाहूँ तो नहीं देना सकता। अगर मैं चाहूँ खाली मैं देखूं तो मैं देखूंगा उसको, हाँ। और पेशेंट भी अगर देखना चाहे अपना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है या ओपीडी का रिकॉर्ड है तो वो भी मैं उसको दे सकता हूँ एक्सेस। और वरना मेरे पास है ही, वो पेपर लेके जाता है और मेरे पास रिकॉर्ड में ही। तो ये आपके अपने बेनिफिट के लिए ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा हाँ, नहीं तो पेपर ये। हाँ डॉक्टर सुनील बाकी सर, लोग भी कर सकते हैं, और डॉक्टर बहुत सुनील सिंगर सर, कॉस्टली डॉक्टर नहीं है। सुनील सिंगर सर, प्रॉब्लम इतनी नहीं है, प्रॉब्लम इससे ज्यादा है। उसमें मोबाइल का हेल्थ रिकॉर्ड भी डेफिनेशन में आता है। अब मोबाइल में आप व्हाट्सएप टेली कंसल्टेशन को आप कैसे क्लाउड में डालेंगे? आपको रास्ता निकालना पड़ेगा उसके लिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ, और बाकी मैं अपने मेडिको लीगल चैप्टर की तरफ से फिर से मैं, एक्चुअली डॉक्टर समीर दलवाई से भी मेरी बात हुआ था, तो उसमें ये हुआ कि चाहे जेपी नड्डा जी से या किसी से, लेकिन पहले सेक्रेटरी लेवल पे कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ये। सर क्योंकि सर आज सर की आज की तारीख में आज की तारीख में कंप्लेनेंट और लॉयर हमसे ज्यादा अवेयर हैं, और सब चीज नेट पे नहीं, उपलब्ध है, और ये वेबसाइट पे ही है। जो जो व्हाट्सएप टेली कंसल्टेशन वाला है, आप टेली कंसल्टेशन कीजिए, और मैं तो इसी पैड से करता हूँ कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन। इस पे पर्चा लिखता हूँ, मेरा रिकॉर्ड में जाता है, उसकी फोटो पीडीएफ बना के पेशेंट को भेज देते हैं। लेकिन वो भी I आ गया think ना, वो भी सिंपल हो लाइव, गया। वो भी पूरी लाइव हो गया। दो any more queries because I think दो we are दो चीज और overstretched. मैं Yes, sir. दो We have चीज to और close it मेंशन out. करना चाहूंगा सर, दो चीज मेंशन करना चाहूंगा मैं। एक तो Yeah. जैसे वासुदेवा सर ने पूछा था कि ओपीडी में पेशेंट आता है तो हम उसको क्या करें, तो मेरा ख्याल है शायद सर का मतलब था कि सिक पेशेंट आता है तो, और उसको हम एडवाइस करते हैं एडमिशन, और वो हमारी गाइडलाइन फॉलो नहीं करता और इधर उधर चला जाता है और पेशेंट को कुछ आता है। सर ऐसे केसेस में लिखते हैं कि पेशेंट रिफ्यूज एडमिशन, रिस्क एंड प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन टू हिम in language best understand by him, and patient wants oral medication तो ये पूरा ना मेंशन ना कर दें सर। ना सुनील, ऐसा नहीं। देखो, अगर आपको लगता है उसको एडमिशन रिक्वायरमेंट है, ही वांट्स इंजेक्ट, तो आप उसे लिख दो कि पेशेंट रिक्वायर्स एडमिशन। आप उसको ओरल मेडिसिन मत लिख करके भेजो, नहीं क्योंकि नहीं लिखना, ये रिस्की है। रिस्की है, उसके नहीं बाद लिखना उसकी चाहिए। उसकी उसकी चांस है ना, उसको ऑप्शन भी क्यों दे रहे हो उसको? नहीं उसको देना ठीक है, चाहिए। भाई मान लो साला शौक में है या बिल्कुल ऐसा है कि गड़बड़ हो शॉक वाले को तो नहीं लिखेंगे सर, जो डाउट होता है, जैसे हाई ग्रेड फीवर है, 4 दिन से आ रहा है, ठीक नहीं हो मुझे रहा। पता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन कई बार आती है, हम कहते हैं यार ये देख लो, शाम तक करके देख लो, 3-4 बार नेबुलाइजर लगा लो, नहीं तो नहीं ठीक हो तो घर चले जाना उस पर। ऐसा होता है ना, ये वी डू वेरी ऑफन ऑल्सो कि चलो ये देख लो शाम तक यूरिन आउटपुट है कि नहीं, कर ले तो चलता है। ये तो केस टू केस डिसाइड करना पड़ेगा, पर मैं तो कह रहा हूँ हर जगह ना सेफ, अपने आप को पहले बचाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क मत लो कहीं। दूसरा सर ये है कि हाई रिस्क कंसेंट जब हम लेते हैं पेशेंट से आईपीडी में, और वो हमने हाई रिस्क कंसेंट लिख ली, सब कुछ लिख दिया, पेशेंट का अटेंडेंट कहता है जी मैं तो नहीं कर रहा साइन। तो इसमें ये कई बार रिफ्यूजल टू कंसेंट इज ए वेरी वेल नोन थिंग, तो पहले तो लिखवा लो। अगर वो नहीं लिखता तो देखो, इसमें पूरा ग्रेडिंग है इसकी,
सबसे पहले तो वो लिखे, वो नहीं लिखे तो आप कोई भी बाई स्टैंडर्ड, जो कोई बंदा वहाँ हॉस्पिटल में कोई खड़ा हो, प्रेफरेबल नॉट योर स्टाफ, उससे साइन करा लो। नहीं तो फिर आखिरी में अपने स्टाफ से साइन करो, बाकी नहीं तो फिर आप भी लिख दो। हम तो कहते हैं अगर आप एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बार आप जब अगर फंसोगे तो एक्सप्लेन करते हैं, सर ये बात ये नहीं माना, तो ये लिखा हमने 4 जगह लिखा हो, पर कुछ लिखना जरूरी है। अगर आप लिख दोगे हम तब भी मान लेते हैं। नहीं और मेरे तो उसमें हम ये मेंशन कर दें कि पेशेंट अटेंडेंट, उसका नाम, उसका रिलेशन, रिफ्यूज टू साइन द कंसेंट, बस टाइम डेट डाल ये मैं तो कह रहा हूँ हम लोग मान लेते हैं ना। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि सर उसको हमने शिफ्ट करने के लिए बोला था, सिजेरियन के लिए बोला था, मना कर दिया था, आता है ना। तो गायनी के नोट्स पड़े होते हैं कि आस्क ऑफ सिजेरियन दे रिफ्यूज, हम लोग मान लेते हैं। Sir, this is उसके called उसके उसके पेशेंट के साइन हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप नहीं तो जजेस तो मोस्टली डॉक्टर्स के फेवर होते हैं, ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या होगा। अगर उसका साइन हो तो बेस्ट है, तो आप किसी के भी साइन करवा के लिख दो, इवन सिविल कोर्ट में जजेस मान लेते हैं उसको। that is called, this is Dr. Gupta had told, negative consent, and patient have got right to refuse for consent, refusal of consent, and that should be signed, Dr. बताया, 2 witness, and they should be neutral witness. अगर न्यूट्रल विटनेस आपका स्टाफ ना, इन केस ना मिले तो नहीं डॉक्टर गुप्ता सर वो सही कह रहे हैं, ग्रेडिंग होती है, आप जैसे कर पाओ कर लो, मेंशन होना चाहिए बस। मेंशन हो। दूसरा इसको बस हाँ कंसेंट बिल्कुल। के अलावा मान लो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन लिखा, उसने नहीं कराया, आपने कहीं रेफर किया, नहीं कराया, आप अपने लाइन से लिख दोगे। हमारे देखो काउंसिल में इतने केस आते हैं, अगर डॉक्टर ने लिखा है ना, हम ज्यादा बहस में नहीं पड़ते, हमें पता है क्या हुआ होगा वहां पे, वो क्यों लिखेगा वो। पेशेंट तो जो देखो जो कंसेंट दे रहा साइन भी क्यों करेगा, पेपर नहीं करते, अड़ियल होते जी, हम तो नहीं करते साइन, क्या कर लोगे, यू राइट इट, विल एक्सेप्ट इट। Sir, any further comment, because we have overstretched our time, and we have had a very nice discussion, very moving, बहुत सारे practical points that we discussed today, and I like to thank everyone on the panel, our speakers, Dr. Arun Gupta sir, President DMC, Dr. Satish sir, Dr. Sunil sir, Dr. J.K. Gupta, for taking time off and making it a good event, and we have a lot to discuss, and there are so many aspects. I think we have just touched, not only just 10 to 20% we have just touched. And to elaborate further, we have planned another session, that is a physical session on 22nd of February. So it will be a panel discussion, the like we are having just now. So that panel discussion we will have on 22nd of February at Hotel Radisson Blue, Kaushambi. And this event is again being conducted by IAP Delhi in association with IAP East Delhi and Medicolegal chapter. So I invite all of you to be part of that event and make it a big success. Thank you very much. I request Dr. Neeti to please convey thanks to all the dignitaries. Dr. Neeti, please. Thank you, everyone. And I invite Dr. Lalit Gulati for a vote of thanks. Dr. Lalit, Dr. Lalit. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, everyone. I am honored to चेहरा तो deliver दिखा the दो vote of अपना. thanks on behalf of East Delhi IAP. I want to express my sincere gratitude to our esteemed speaker, Dr. Satish Sharma, Dr. V.K. Goyal, Dr. J.K. Gupta, for sharing their valuable insight and expertise with us. Your presentation were very informative and invaluable for us. I would like to thank all our chairperson and all participants for our enthusiastic participation. We look forward to continue these academic webinar in the future also. Thank you. Over to Dr. Niti ma'am. So thanks, everyone. Thank you, sir. Thank you. Looking forward to meet you again, sir, on 22nd. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Dr. Arun sir, please you, sir. time निकाल लीजिएगा. बाय बाय। 22nd को क्या सैटरडे संडे क्या है, हाँ, सैटरडे पड़ेगा सर. टाइम क्या रखा है? दोपहर का ही रखा है. पोस्ट लंच 1 to 2:30 विल बी द लंच, और 2:30 से लेके 4 बजे तक पैनल डिस्कशन. ठीक है, तो उसमें इस तरीके से काफी सारे लेयर्स आ जाएंगी. जो हम आज डिस्कस कर रहे थे वो भी शामिल हो जाएगा, कुछ पॉक्सो वगैरह भी आ जाएगा. वो आई थिंक इट विल अगेन ए वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी एजुकेटिव फॉर अस. ठीक है, डन। जी सर, जी सर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. वीडियो भी नहीं आ रही है. Excellent, excellent, sir. Thank you. बाय बाय। Thank you, sir. Thank बाय you. बाय एवरीवन. थैंक यू. Bye bye. Bye, sir. Bye. Bye. Thanks for being part of it. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you, sir. Good night.